This class will be till 11 o'clock. If you see a class, I will take it. Okay. So today's topic is micromagnets and their application in biomedical applications. Biomedical applications, there are two types. One is called in vivo and ex vivo. दोनों का क्या मतलब है? First, पहले का मतलब है you do the treatment inside the human body, inside organism. That can be a human, that can be an animal. और दूसरा का मतलब है you take out the organ, take out I shouldn't say organ. Okay, let's say organ and study that. These are the two applications. These are the meaning of it, in vivo or ex vivo. So, जैसे कि for example, in the case of in vivo, a very good example is targeted drug delivery. So in vivo is basically related to healing, when you are healing any disease, and ex vivo is mainly related to study. For example, cancer cell growth हो रहा है, cancer cell tomography, CTC, तो इसमें ex vivo is used. अच्छा, now what is the reason why we are relating micromagnets to this biomedical applications? इसका कारण है कि जो there are some magnetically sensitive species biological species. ठीक है, जैसे there is something called cervicospinal fluid. CSF. There is something called the cervicospinal fluid. ये spinal fluid ये कहाँ पे होता है? Other brain. You have a brain or the spinal cord, right? It's the brain. और ये है तुम्हारा spinal cord. There is a fluid which is protecting these regions. There are fluids which are protecting these regions. And इसका बोल रहा है CSF.
So any sort of, so this is a magnetically sensitive fluid. So any sort of change which is captured by means of the magnetic study that can lead to detection of some diseases. Right. So let us first try to understand what is a micromagnet. The micromagnet. Magnet किस टाइप के होते हैं? Other it is when we say magnet, पहला चीज ध्यान में क्या आता है? When we say magnet, हम back to magnet. When we say magnet, iron, cobalt, nickel. Right? What type of magnet are these? They are called ferromagnets. I could say soft magnets. Why they are called soft magnets? Because they have got a small hysteresis loop. का जो MH loop होता है, that is smaller, and it can be changed with the application of the magnetic field, external magnetic field जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, इसी तरह से we can easily change this, right? इसी तरह से there are some magnets called thermal alloy. परम सुख होगा, परम सुख, परमात्मा, जैसे परमात्मा. So this is actually alloy, basically nickel and iron. एक खास alloy है, that was first discovered in 1914 in Bell Labs. It has got property that the unique property जो retentivity इसकी high है, right? Retentivity इसकी high है, but coercivity इसकी कम है, and it has got good conductivity. So it is also comes under the category of soft magnet. अच्छा एक बार बोलो तो if the retentivity is high and the coercivity is low, hysteresis loop कैसे होगा? How will hysteresis loop look like? It will be लंबा होगा and छोटा होगा. It will be I'm not exactly able to draw it. Normally जो तुम्हारा ferromagnetic hysteresis loop वो मान लो ऐसे होना चाहिए उसको. Normal ferromagnetic hysteresis loop. लेकिन यहाँ पे क्या है? It has got MR इसका हाई हो जाना है. Retentivity this one. Retentivity और इसका जो coercivity है ये कम होगा. So this is how it will look like. So ऐसे होने से फ़ायदा क्या है? We can easily switch the direction. Switching भी fast होगा. External magnetic field H जैसे हम इसको change करेंगे from positive to negative, it automatically will switch. And apart from that, switching होने के बाद जो magnetism इसमें develop होगा that will be very high. So even if it is switching very fast, magnetism that is getting developed is very high. So that is the advantage of this one. उसके बाद there are certain alloys called super paramagnetic. नाम इसका full name क्या था? Iron oxide diameter. Super paramagnetic. Spion का मतलब है super paramagnetic
iron oxide nanoparticles. This also comes in the category of soft magnet. So इसका जो एडवांटेज है that is when we say nano particle, इसका मतलब it is about 5 to 100 नैनोमीटर से रेंज होता है. और इसका जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस मटेरियल इज MRI कॉन्ट्रास्ट. MRI में जो होता है जो कॉन्ट्रास्ट हमको मिलता है ब्रेन का, उसमें दिस एक्ट्स एज एन एजेंट और टारगेटेड डिलीवरी. And many more applications. So it won't show magnetism unless an external magnetic field is required. यहाँ पर भी this external magnetic field का requirement. In fact, all the soft magnetic alloys they require some sort of external magnetic field to get them magnetized. Okay. So these are soft. Right. Corresponding to that, we have something called hard magnetic alloys. Hard magnets between transformers or whatever we use, that is permanent magnets. कोई इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देने की जरूरत नहीं है. ट्रांसफॉर्मर्स में जो होते हैं तो यहाँ पर we require some alloys. Right. So the alloys which are used for making permanent magnets in the FPPT, SM, तो इनको तुम नोटिस करोगे तो you can see that it is always a combination of सब alloys में एक heavy metal मौजूद है हर एक alloy में. हेवी मेटल देने का कारण क्या है? हेवी मेटल देने का कारण है स्पिन ऑर्बिट. स्पिन ऑर्बिट कपलिंग. Because the total Hamiltonian is the combination of exchange interaction. Exchange interaction मतलब ठीक है, प्लस spin orbit coupling, and spin orbit coupling is most dominant when you have a heavy metal. Now, okay, so this is how a soft magnet or small magnet or a permanent magnet is. अभी हम लोग आते हैं ये जो हम लोग बोल रहे हैं माइक्रो मैग्नेट.
ये क्या चीज़ है? So from the name itself you can understand that when we are reducing the scale को हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं, राइट। अच्छा, now स्केल को कैसे कम कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि मैग्नेट को काट रहे हैं, it's not that. There are certain ways. अच्छा, पहले let us try to understand what happens if you reduce the scale. If you reduce the scale of a magnet, इसमें क्या होता है? It leads to something called del V, gradient of magnetic field. Gradient पता है ना? Gradient अभी it's not the same in every direction. ये बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है. There is a gradient. dV by dt. इसका मतलब क्या है? dV ठीक है, ग्रेडियंट पड़ा है ना? तो टैप वाटर याद है ना? गट्टे डाल जब पड़े थे, टैप वाटर गिर रहा है, तो इट ग्रेडियंट. तो इसका मतलब क्या है? इट इज क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट लेंथ. तो इसका जो ग्रेडियंट का वैल्यू है इट इज वेरी हाई. ये जो है ये बहुत हाई होगा. ग्रेडियंट बिकम्स वेरी हाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 6 Tesla per meter cube there because of the gradient. It is in Tesla and it is in meter. dV by dt. So this is very high gradient of magnetic field. मतलब मैग्नेटाइजेशन चारों तरफ बहुत अनएसिम्प्टोटिक कंडीशन में है, वेरीज. अच्छा, तो ये ग्रेडियंट से फिर हम लोग इसको इस्तेमाल करके we can fine tune, we can control the magnetically sensitive species, biological species. So this is the reason why you are scaling down the magnet, because it is providing a very large gradient of magnetic field. So अगर ये gradient हो रहा है, right? So there will be a force associated with it. Force due to this gradient. Now the force can be expressed as volume, susceptibility, permeability, no. So this is the volume. Susceptibility. This is permeability. Magnetization.
is coming from this curve. F is equal to small m dot L. यहाँ से if you do all the mathematical calculations, जैसे L is equal to sin A, B is equal to B0 H and small m kinetic dipole moment, and this is volume, and this is volume. This is the force that is acting on the magnetic steady sensitive जो कंट्रोल की बात है, ठीक है. अच्छा, now let us come to the fact that okay, now we have understood that magnetic gradient से magnetic इसको कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन what about the structure, कैसे कंट्रोल करें? तो इसके लिए इसका जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है, फैब्रिकेशन एंड डिजाइन, fabrication and design of this micromagnet is very important. So next topic is the fabrication and design. There are three ways by which we can design the model. एक को बोलते हैं TMT, एक को बोलते हैं टोको, लास्ट को बोलते हैं UMR. TMT, टोको and UMR. What is TMT? TMT is thermal, magnetic, pattern. Okay. But is topo is topographical. Lithography based, topographical lithography. UMI is micro magnetic imaging. ठीक है, थर्मल मैग्नेटिक पैटर्निंग, टोपोग्राफिकल लिथोग्राफी और माइक्रो मैग्नेटिक इमेजिंग. तो पहले वाले में वी यूज लेजर. फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड कि वी यहाँ पे तुम लोग को आई वुड लाइक टू से ये जो माइक्रो मैग्नेट्स होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज एरे.
magnetic structure. Small magnetic particles. Each of them is representing a micromagnet. This is how they look like. So the first step, इसको लोग basically क्या करते हैं? We take a magnet, ठीक है, और with the help of a laser, we selectively demagnetize certain areas. और भी ज़्यादा होता है यहाँ. So these are the areas जहाँ पे the temperature is more than Tc. Tc stands for cubic temperature. If we take the magnet to a temperature which is more than cubic temperature, it will lose its magnetic property. So this is a way of demagnetization. और डीमैग्नेटाइजेशन करके भी फ्रीज इट. फ्रीज क्यों करता है? एनी आइडिया? डीमैग्नेटाइजेशन से पैटर्न स्ट्रक्चर बन गया. देयर आर एरियाज. तो इन दोनों के बीच वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज नाउ मैग्नेटिक एरिया, राइट? दिस एरिया इज मैग्नेटिक. So they are magnetic regions associated, which are representing micromagnets. So why do we freeze it? Freeze इसलिए करते हैं to retain the structure, retain or lock the structure. इससे कि again diffusion वगैरह, grain boundary movement इससे कि ना हो. So that what we have created we can. So this is thermal magnetic patterning with the help of laser. दूसरा आता है टोपोग्राफी. इस टोपोग्राफी का मतलब है anything which can be related with a genus. जैसे याद है मैंने जब क्वासी पार्टिकल्स बना रहा था, जब बेल सेमीकंडक्टर्स बना रहा था, तो मैंने एक कप का जिक्र किया था. इसमें डोनट है ना, कप एंड डोनट. कप का ये वाला रीजन देखो, इट इज अ होल, इनफाइनाइट होल. डोनट का सेंटर रीजन इनफाइनाइट होल. तो इन दोनों के केसेस में द जेनस इज अ होल, मतलब एनीथिंग विच इज बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच इज इंटैक्ट. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ टोपोग्राफी. Surface morphology and topography में although they are quite similar but with a slight difference. Topography हमेशा एक fixed structure की basis पे होती है, जिस कॉमन. तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले we take we create a surface पे जो कि non magnetic, अभी तक magnetism इसमें rise नहीं हुआ है, उसका जो we fabricate it with different means. Lithography मतलब to make patterns. जैसे सिलिकॉन चिप्स बनाते हैं ना, सिलिकॉन माइक्रोचिप्स. तो लिथोग्राफी करके हम लोग उसके सरफेस पे माइक्रो या नैनो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं फर्स्ट में. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू include some magnetic particles. Magnetic nanoparticles. So it forms a structure
which is again a sort of an array or external magnetic field below. So again it forms an array. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन एम्ब्रायोनिक kidney cells. Human embryonic kidney cells. So once we have created a pattern like this, ऐसे करके हम लोगों ने पैटर्न क्रिएट किया है ऑफ नैनो पार्टिकल, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक का मतलब है नैनो पार्टिकल, दिस इज एब्जॉर्प्शन, D for distribution, M का मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक इट इज मैनिफेस्टेशन. तो ऐसे करके नैनो पार्टिकल का एक स्ट्रक्चर बना के हम लोग वहाँ पे भी पुट दिस HEK को यहाँ पे ऐसे स्टोर करते हैं. देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. स्टोरिंग विद सम एनवायरमेंटल कंडीशन. तो ये एक्स वीवो है कि इन वीवो है? व्हाट डू यू थिंक इट इज एक्स वीवो और इन वीवो? एक्स वीवो, चेकिंग आउट ये फ्रैंक ग्राहम नेदरलैंड्स में 1973 में एक्चुअली ही फर्स्ट डिस्कवर्ड दिस. और ये जो नंबर है इसका, इट इज नॉट टेम्परेचर, राइट, इट इज इज 293rd एक्सपेरिमेंट. Okay, so this is about cocoa, right? Now we come to micromagnetic imaging. Micromagnetic imaging में क्या होता है कि we have मैग्नेटिक फिल्म्स होते हैं. अब तक उन्होंने पैटर्न डेवलप नहीं किया. मैग्नेटिक फिल्म्स. So these magnetic films have got some magnetic field associated with them. जिसको हम लोग stray magnetic field बोलते हैं. Not stray dot की तरह stray magnetic field drop. मतलब that is surrounding, मतलब it's not very good, मतलब calculated नहीं, just got some magnetic field. और यहाँ पे एक पॉलीमर मैट्रिक्स होता है.
एग्जाम्पल पॉलीडाइमिथाइल साइलोक्सेन, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वी पुट सम मैग्नेटिक नैनोपार्टिकल्स। ठीक है, और ये स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फिल्म्स, दे make a pattern of the magnetic nanoparticles on the polymer magnets. So we have a flexible substrate which is a flexible transparent substrate जिसमें कि मैग्नेटिक नैनोपार्टिकल अरेज मौजूद है। ठीक है, सो मैग्नेटिक नैनोपार्टिकल, मैंने जो दो डायग्राम शेयर किया है उसमें दिखना एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट एक पिक्चर है इन द फर्स्ट पेज, फर्स्ट और सेकेंड पेज। ठीक है, उसको तो मैग्नीफाई करोगे, आई थिंक द पिक्चर इज नॉट क्लियर। ये जो शेप है ना ऐसे करके दिया हुआ है, इसको तुम अगर मैग्नीफाई करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे एट सेंटर जरा ऐसे करके पैटर्न्स बनी हुई है। सेंटर यहाँ से शायद दिखेगा नहीं। So this is actually now मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। CRNS बोल के यूरोप में, हमारे यहाँ पे जैसे इंडिया में जैसे CSIR है, वैसे यूरोप में दे हैव गॉट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड CRNS, रिसर्च वगैरह करता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ J. Fourier, I don't know exactly the J means, J. Fourier in Grenoble, France. Now they have come up with another magnetic probe जिसका नाम है Mach-Pi. फॉर्म है। मैथ मैग्नेटिक है, P stands for probe and IE stands for in vitro experiment. ठीक है, अच्छा ये जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में मैंने जो CSF के बारे में कहा था, व्हाट इज CSF? देखो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो उसको अगर हम डिटेक्ट कर रहे हैं इन विवो और एक्स विवो, इज इन विवो। सो ये वाला टेक्निक है, इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ दिस सेरिब्रोस्पाइनल। अच्छा, व्हाट आई विल नेक्स्ट डू, मैं तुम लोगों को एक MCQ दूंगा बेस्ड ऑन टुडेज क्लास एंड यू नीड टू आंसर दैट।